So hello everyone. Up to now we have studied about uh, refractive index and the rules that how the refraction of the light in the different media occurs. Now we are going to start with our twinkling of the stars, that is the new topic of this chapter, refraction of the light. So we have asked the can you tell section, have you seen a mirage which is an illusion of the appearance of the water on a hot road or in a desert? मतलब जो मिराज होता है दैट इट सीम्स टू बी अपीयर, मतलब वहां पर पानी नहीं होता लेकिन हमें ऐसा मतलब इल्यूजन होता है कि वहां पर पानी है. दिस सिचुएशन मोस्टली वी हैव टू ऑब्जर्व, वी केम इन ऑब्जर्वेंस विद द वेन इन द डेजर्ट सिचुएशंस. सो हैव यू सीन दैट द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड एंड अबव अ होली फायर अपीयर्स टू बी शेकिंग? व्हाई डज दिस हैपन? मतलब जो होली के फायर होती है वहां पर, मतलब कुछ जो होली के फायर के ऊपर जो होते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हमें ऐसे शेकिंग पोजीशन में मूव होते हुए दिखाई देते हैं. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अफेक्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टू सम एक्सटेंट. In both the examples above, the air near the hot road or the desert surface and near the holy flames is hot and hence rarer than the air above it. The refractive index of the air keeps increasing as we go to increasing heights. In the first case above, the direction of the light rays coming from a distance keeps changing according to the laws of the refraction. मतलब जो कि light rays आ रहे हैं that keep changing the position as per the laws of the refraction. And laws of the refraction, as we have seen above, that is incident ray and refracted ray and the point of incidence and the normal lie in the same plane, and for a given pair of the media in the glass air, so the ratio of the sin I upon to sin r is equals to constant. That is also we called as the Snell's law. ये हमने देख लिया था. So the light rays coming from a distant object appear to be coming from the image of the point object inside the ground as shown in the figure 6.5. This is called as a mirage. So as we can see here, यहाँ पर cold air है, hot air है and hot surface है. So as we have seen the law of the refraction, मतलब refraction का जो law है वो क्या कहता है कि जब light travel होती है from one transparent medium to the another transparent medium, it bends towards the normal or it changes the position accordance with that. So यहाँ पर उसी के वजह से रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल की वजह से हमें अपीयर होता है दैट द सरफेस इज हैविंग द वाटर, बट एक्चुअली ये होता नहीं, दैट इज द इल्यूजन. So, in the second example, the direction of the light rays coming from the object beyond the holy fire changes due to the changing refractive index above the fire, thus the objects appear to be moving. और सेम सिचुएशन जो कि होली फायर है उसमें भी सेम सिचुएशन जो अपीयर होती है दैट द ऑब्जेक्ट्स आर appear to be the shaking. This is because of only of the refractive index above the fire of the changing objects. सो इसके पीछे जो वर्क हो रहा है दैट इज ओनली द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्लेइंग द मेजर इंपॉर्टेंट रोल. Effect of the atmospheric conditions on the refraction of the light can be seen in the twinkling of the stars. और जो इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का जो इफेक्ट है वो जो स्टार्स हमें ट्विंकलिंग अपीयर होते हैं. सो क्या जो स्टार्स ट्विंकल होते हैं दे आर एक्चुअली ट्विंकलिंग, दे आर हैविंग देयर ओन ट्विंकलिंग मीन्स characteristics or not? So for that, we are going to see about that in here. So stars are the self-luminous and can be seen at the night in the absence of the sunlight. They appear to be the point sources because of their being at a very large distance from us. As the density of the air increases with lowering height above the surface of the earth, the refractive index also increases. Star light coming towards us travels from the rarer medium to the denser medium and constantly bends towards the normal. और जो स्टार की जो लाइट है कमिंग टुवर्ड्स अस फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. और जो कि हमने यहाँ पर देखा था एक रूल कि व्हेन अ लाइट रे passes from the denser medium to a rarer medium it bends away from the normal. और एक रूल था व्हेन अ लाइट रे passes from the rarer medium to denser medium it bends towards the normal. और यहाँ पर जो लाइट ट्रैवल हो रही है दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम कॉन्स्टेंटली. So that means the light ray will bend towards the normal. This makes the star appear to be higher in the sky as compared to its actual position as shown in the figure. मतलब apparent position of the star अगर हम देखेंगे so we are मतलब हमें दिखाई पड़ती है ये, बट एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो नजदीक होती है बट हमें वो दूर दिखाई देती है.
दिस इज बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट प्रिंसिपल, और जो लाइट रे ट्रैवल हो रहा है रेयर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम में, सो लाइट गेट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. This is the effect that we seems to appear that the stars are away from us as a far, but their actual position is nearer. So the apparent position of the star keeps changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, the refractive index of the air keeps changing continuously. Because of this change, the position and the brightness of the star keep changing continuously and the star appears to be twinkling. And due to this, only the refraction of the light and all, so we appear to seem the refractive index of the air gets changing continuously, and the position of the brightness of the star also keeps changing continuously, and we it seems to appears that the star is twinkling. And the atmospheric factors also affects here, that is the air density, temperature and many more. We do not see twinkling of the planets. मतलब जो स्टार्स का तो हमने देख लिया कि स्टार्स appears to be twinkling, लेकिन planets twinkling क्यों नहीं दिखाई देते? क्या है इसके पीछे पीछे का मतलब जो रीजन है? सो क्या है that we are going to see? This is because planets are much closer to us as compared to the stars. They therefore do not appear as the point source, but appear as a collection of the point sources. So यहाँ पर क्या है कि जो planets है, so planets are closer to us as we are living on the earth. So planets are closer towards us as compared with the stars. So due to which the planets does not appear to be as the point source. मतलब जो star है वो तो हमसे दूर है. Suppose these are the stars which are too much away from us, so the distance is too much huge, and due to this they are appear to be as the point source. But planets का ऐसा नहीं है. Planets do not appear to be as the act as a point source. So due to which that they are not appearing to be as the twinkling because of the changes in the atmospheric refractive index of the position as well as the brightness of the individual point source changed, but the average position and total average brightness remains unchanged and planets do not twinkle. By sunrise, we mean the appearance of the sun above the horizon. But when the sun is somewhat below the horizon, its light rays are able to reach us along as a curved path due to their refraction through Earth's atmosphere as shown in the figure 6.7. Thus we see the sun even before it emerges above the horizon. Same thing happens at this time of the sunset, and we keep seeing the sun for a short while even after it goes below the horizon. एंड ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन है, सो हॉरिजॉन इज एक्चुअली अ लाइन विच वी हैव कंसिडर्ड दैट, जिसे हम क्षितिज बोलते हैं. सो दैट इज द लाइन विच वी आर अज्यूमिंग एज द बाउंड्री लाइन, और वी आर चेकिंग फॉर एज द पोजिशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन. मतलब सूरज उगा है या सूरज डूब गया है, दैट इज द फैक्ट वी आर चेकिंग एज विथ कंपेयर विद द रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन. सो मतलब अर्ली सनराइज जो कि हमें दिखाई देता है, एक्चुअली सनराइज हुआ नहीं होता, बट इट्स हमें दिखाई देता है कि सनराइज हो गया है. एंड ऑल्सो सनसेट डज नॉट ऑकर्स, बट वी हैव सीन्स दैट द सन हैज सेट. सो ये क्यों होता है? What is the reason, what is the fact which is behind this situation occurring? तो फैक्ट क्या है? As we are seeing that the light rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through the Earth's atmosphere, as shown in the figure 6.7. मतलब रियल पोजीशन अगर हम देखेंगे, सो सन की ये होती है बिलो द हॉरिजॉन व्हेन द सन राइजेस अप, और जो अपरेंट पोजीशन जो कि हमें दिखाई पड़ती है, दैट इज दिस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट as per the in the atmospheric conditions and all, and with the air as the transparent medium. So, dispersion of the light. One fact which is not mentioned here, but I want to tell that the distance from मतलब जो सनराइज होने के लिए जो टाइम लगता है, as we are able to see the sunrise from the earth surface. मतलब सपोज यह हमें हमारी अर्थ है, लेट्स वी विल सी हियर, ये यहाँ पर अर्थ है. सो अर्थ से मतलब सनराइज हमें दिखने के लिए, मतलब सन जब अपीयर होता है, सो इट टेक्स अप्रॉक्स 8 minutes 20 seconds. 8 minutes
and 20 seconds. 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगता है सूरज को, मतलब हमें देखने के लिए पृथ्वी से। तो मतलब दैट वी कैन अज्यूम, मतलब जो कि 8 मिनट, मतलब फ्रॉम दिस वी कैन सी हाउ द मतलब स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर एक फैक्ट है कि मतलब लाइट की स्पीड इतनी होने के बावजूद भी हमें अर्थ से सूरज को देखने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। मतलब सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे हमें दिखाई जब पड़ती है, दैट टेकिंग द 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, दिस मच टाइम एज कंपेयर दैट, मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट अगर हम देखेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट, सो इट इज 3 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 30 लाख 3 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर मीटर ट्रेवल करती है। दिस मच स्पीड होने के बाद भी, सो फ्रॉम दिस वी कैन एबल टू कैलकुलेट दैट हाउ मच फार द सन पोजिशन इज फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द फैक्ट दैट, just for the knowledge, I have told here, as it is not in the topic, but we should know about that. Dispersion of the light. So hold the plastic scale in in your compass in front of the eyes and see through it while turning it slowly. You will see light rays divided into the different colors. These colors appear in the following order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. You know that the light is the electromagnetic radiation. Wavelength is an important property of the radiation. The wavelength of the radiation to which our eyes are sensitive are between 400 and 700 nanometer. In this interval, radiation of the different wavelengths appear to have the different colors mentioned above. Red light has a maximum wavelength that is close to 700 nanometer, while violet light has the smallest wavelength close to the 400 nanometer. Remember that 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meter. ये देखने से पहले पहले ये यूनिट का जो कन्वर्जन है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो सपोज जो कि हमें दिखाई आप नोट डाउन कर सकते हैं, एज द यूनिट कन्वर्जन इज मोस्ट, मतलब यहाँ पर तो यूज हो रहा ही है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऑल्सो इट इज टू मच इम्पोर्टेंट। सो डेसी, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच आई एम टेलिंग नाउ: डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। these are all the स्मॉलेस्ट यूनिट्स, मतलब 10 रेस टू 1, 10 रेस टू 3, जो कि माइनस में 10 रेस टू -1, 10 रेस टू -3, -6, माइक्रोमीटर दैट इज 10 रेस टू -6, नैनोमीटर दैट इज 10 रेस टू -9। मतलब 3 के मल्टीपल के इंटीजर में जो ये चेंज होते जाते हैं। एंड द लार्जर दैट इज द यूनिट्स: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, and yotta. These are all the larger scales units which are also exponentially growing in the conversion, that is 10 raised to 3 multiple. So remember this. I will show with the conversion table, as I am having one diagram with respect to that. So I will be sharing it with you in the next class. So 1 nanometer is equals to 10 raised to -9 meter. This we have to remember. और dispersion of the light क्या है? हम सब ने ये बचपन में तो किया ही है, जो प्लास्टिक स्केल होती है जो हमारे कंपास में, दैट वी आर कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। और जैसे कि हम स्लोली स्लोली टर्न टर्न करते हैं और हम जो लाइट के इसमें देखते हैं, सो इट सीम्स टू अपियर दैट हमें 7 अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? और जो कलर दिखाई देते हैं, दैट इज द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। these are all the line spectrum, visible spectrum, which we are able to see with that scale. लेकिन you know that the light is the electromagnetic radiation. Wavelength is an important property of the radiation. So again हमें यहाँ पर दो fill in the blanks मिल गए हैं, और complete the following. They may ask in the exam: light is the electromagnetic radiation and wavelength is an important property of the radiation. So वेवलेंथ जो है वो हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, एज वी हैव सीन अबाउट दिस रिप्रेजेंटेशन आल्सो इन द लोअर क्लासेस। Wavelength is an important property of the radiation. The wavelength of the radiation to which our eyes are sensitive is between 400 and 700 nanometer. मतलब
जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जो लाइट का, जिसके लिए हमारे आईज सेंसिटिव है, वो है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर. इन दिस इंटरवल रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स अपीयर्स टू हैव डिफरेंट कलर्स मेंशन्ड अबव. और ये क्वेश्चन जो है, इस पर मोस्टली इट asked many of the times the red length has the maximum wavelength that is close to 700 नैनोमीटर. और जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द 700 नैनोमीटर, while violet light has the smallest wavelength that is the 400 नैनोमीटर. इसे मतलब ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले रेनबो कलर तो हमें पता ही है, वॉयलेट, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम. रेड की कितनी होंगी? दैट इज फ्रॉम द 400 नैनोमीटर दैट वी आर सीइंग. 400 टू 700 नैनोमीटर दैट इज द विजिबल टू अवर आईज, मतलब हमारे आई सेंसिटिव है उसके लिए. सो सपोज दिस इज द, यहाँ से 400 नैनोमीटर और यहाँ पर 700 नैनोमीटर. वॉयलेट का 400, रेड का 700 नैनोमीटर वेवलेंथ. नेक्स्ट इज that is only given here, smallest wavelength 400 nanometer. Remember that 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meter. This may be asked, और मैंने कन्वर्जन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का तो आपको बता ही दिया. तो एक बार फिर से बोल देता हूँ. दैट इज डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा. In vacuum, the velocity of the light rays of all the frequencies is the same. दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन. वैक्यूम में जो है, वेलोसिटी ऑफ ऑल द लाइट रेज ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज द सेम. मतलब वहां पर ना कोई मीडियम है जिसकी वजह से लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दैट इज नॉट एनी ऑफ द एयर मीडियम ड्यू टू विच द लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और कोई सा भी लाइट का जो प्रिंसिपल है, दैट वी कैन see that there, that does not possible because there is no medium present. But the velocity of the light in the medium depends on the frequency of the light, and thus different colors travels with different velocity. Therefore, मतलब वैक्यूम में जो है वेलोसिटी ऑफ ऑल द लाइट रेज ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी सेम होंगी. जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो आंखों पे जो रोशनी पड़ती है लाइट की, जो रिफ्लेक्ट होके आती है ऑब्जेक्ट से, ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वो ऑल दैट और ऑल आर हैविंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज द डिफरेंट वेलोसिटी. बट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम depends on the frequency of the light, and thus different colors travel with the different velocity. That is the only thing which is told here, जो मैंने आपको अभी बताई. Therefore, the refractive index of a medium is different for different colors. और इसी की वजह से, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट हर एक मीडियम के लिए होती रहती है, ड्यू टू विच दैट ओनली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स. ऐसा क्यों है? जो कि स्नेल्स लॉ हमने यहाँ पर देखा था. स्नेल्स लॉ क्या है? रेशियो ऑफ द साइन आई टू द साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एन, बराबर इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल एंड ऑल. और जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो कि हमने देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम्स, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट्स के ऊपर. मतलब वेलोसिटी ऑफ द उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द लाइट कौन सा है, दैट इज ओनली we are taking, that is refractive index of the one first with respect to second, that is equals to velocity of the light in the second medium upon velocity of the light in the first medium. So due to which that, so velocity of the light will change as the medium changes. This is of course obviously. So different light colors or travels with the different velocity in the medium. Thus, even when white light enters a single medium like glass, the angles of the refraction are different for the different colors. So when the white light coming from the sun through the air enters any refracting medium, it emerges as a spectrum of the seven colors. और जो व्हाइट लाइट जब किसी मीडियम में, जहां पर मीडियम लिया है सनलाइट कमिंग फ्रॉम द एयर, enters into the refractive medium, it gets split into the seven colors, that is the spectrum.
So, which we are able to see that of the seven colors, the process of separation of the light into its component colors while passing through the medium is called as the dispersion of the light. डिस्पर्शन का मीनिंग ही सेपरेशन है, मतलब लाइट का सेपरेट हो जाना। मतलब जब व्हाइट लाइट एक ट्रैवल करेगी एक पर्टिकुलर मीडियम में, सो इट गेट्स स्प्रेड इनटू डिस्पर्स इनटू द सेवन डिफरेंट कलर्स, दैट इज द विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम। और ये definition is also important with exam. The process of separation of the light into its component colors while passing through a medium is called as a dispersion of the light. So, Sir Isaac Newton was the first person to use a glass prism to obtain the sun spectrum. When the white light is incident on the prism, different colors bend through the different angles. Among the seven colors, red bends the least, while violet bends the most. Thus, as shown in the figure 6.8, the seven colors emerge along the different paths and get separated, and we get a spectrum of the seven colors. And यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सन स्पेक्ट्रम किया था, सनलाइट को एक प्रिज्म में ट्रेवल करके उसका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू द विबग्योर, दैट इज द सेवन कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एंड यहाँ पर जो ऑब्जर्व हुआ कि रेड रेड लाइट जो है दैट बेंड्स द लीस्ट, और जो वायलेट लाइट है दैट बेंड्स द मोस्ट। दिस वाज द अबाउट द स्पेक्ट्रम विच वाज ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंट डन बाय द सर आइजैक न्यूटन। So about that partial and total, we are going to see in the next further video.